हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। सुहेल तुम हो? तुम वो अटेंडेंस का कर लेना स्क्रीनशॉट। हाँ सुहेल। ठीक है। जी सर, जी सर। ओके, एक्चुअली मुझे ये अपडेट हो रहा था कुछ ये जूम, इसलिए कनेक्ट होने में थोड़ा इसको टाइम लगा। चलो अभी अपडेट हो गया, हम शुरू करते हैं वहां से जहां हमने कल रुक गए थे। हम कर रहे थे कॉन्जुगेट ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, कुछ हो रहा है हमको जरा। एक मिनट, यहाँ कुछ वेटिंग रूम में कोई है। हाँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ओके। हाँ, तो ये था कि सो इफ नाउ ओके, तुम मेरा व्हाइट बोर्ड देख सकते हो। तो वी वर टॉकिंग अबाउट, नाउ सपोज लेट t be a bounded linear operator from x to x। यानी हम मानते हैं t belongs to bx। उसका मतलब है हम यूजुअली नहीं लिखते bxx, राइट? हम इसको लिखते हैं सिंपली bx, राइट? जिस तरह से हम bxy को लिखते हैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम x to y। लेकिन अगर x to x हो, हम इसको सिंपली लिखते हैं t। इसको लैंग्वेज मतलब लिखते हैं ऐसे हैं, t is a bounded linear operator on x। on x का मतलब from x to x। Okay, then we can define this adjoint of t, जिसको हम t star with the help of this t from x star to x star। यानी I can then define this t star which belongs to, which is a bounded linear operator, हम जो करने वाले हैं, and of course this t star is a bounded linear operator on x star, यानी from x star to x star, यानी इसको हम लिखते हैं t belongs to bx star। So we can define with the help of t this t star, जिसको हम बोलते हैं conjugate of t। लेकिन बिफोर कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम शुरू करेंगे जैसे हमने कल किया था। लेट मी want to get this operator t star which is bounded, which is linear and continuous from x star to t star, given we already have a bounded linear operator on this normal linear space x। Okay, now for that what do we do? Now जैसा कि मैंने last time किया था, if I take this home scalar valued linear operators on a normal linear space, but I'm talking about just this L। मेरे कहने का मतलब है, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम ये शायद शुरू किया था थोड़ा, conjugate of an operator। Now, conjugate is a very important concept. You know, if you're an operator, then you see its conjugate. Now, what we do is, now suppose X is a normal linear space, जैसा कि मैंने कहा था कल। So, अगर ये normal linear space है, तो ये linear space है। तो अगर linear space है, I can think of linear maps between two linear spaces, or what we call, so let me denote by L, and let L be equal to, okay, इसको मैं लिखता हूँ over some field K, let L be equal to, उसको हम कहूँगा मैं home xk, यानी scalar valued
scalar valued linear maps, not necessarily bounded, linear maps या linear transformations on X. यानी जो L है, these are basically all scalar valued maps from this linear space X to K such that F is linear. Linear तुम्हें पता ही है उसकी definition. Okay, then clearly P X star, which is basically bounded linear maps from X to K, bounded linear maps from X to K must be a subset of L. Actually, a subspace of L, because this is a vector space, this is a normal linear space. Because अगर ये bounded linear operator है, तो linear तो होगा ही, right? Now, okay. Now let T be a linear operator. Let T be just a linear transformation of X into itself. Yani T is a linear map from X to X. Just linear. ठीक है? तो अगर T linear map है, we define T dash from L to L by T dash of F is equal to F composition T for F belonging to L. ठीक है? हम F composition T इसको define करेंगे. तो by that I mean, now पहले तो ये कि is it well defined? ठीक है ना? Now we know that मैं अगर X लूं, यहाँ से यहाँ तक जो है T is a map from X to X, और फिर अगर इसके बाद मैं इस पे F लगाऊं, I would land in K, right? So this is my map F composition T. So F composition T is a map from X to K, right? And of course T is linear, F is linear. Both are linear maps. Composition of linear maps is again a linear map. So F composition T is a scalar valued linear map from X to K. So therefore it belongs to L, because L is the collection of all scalar valued linear maps on L. Right? So this is well defined. By that I mean T dash F. Of course, ये कहाँ belong करता है? Of course, it is F composition T. It belongs to, it's a map from X to K. Yani this would be F composition T applied to X. In this way, I define this T dash. Right? So now what? So F is a lead scalar valued linear map, and T dash F is also a scalar valued linear. So my next page ले लूँगा. So now this T dash is a map. Let me write it down like this: L to L. I've got this map T dash, which joins these two sets. Of course, L is home X K. All scalar valued linear maps from X to K. So it takes an F here and lands it here. Basically, F composition T even a little. I have already given T that belongs to Bx. Okay, now इसमें एक सबसेट है जो कि हमें पता है, एक सबस्पेस है इसके अंदर, वो है X star, right? The question is ये X star अब यहाँ पर भी X star है. Now it is quite possible ये जो T dash है, it can send an element of X star outside X star or inside X star. क्योंकि it's a map from L to L. अब इसका जो सबस्पेस है ये नेसेसरी नहीं है कि ये सबस्पेस को उसी सबस्पेस पे मैप करे.
लेकिन हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि ये टी डैश अब लीनियर होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट इज कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर मैप्स. द क्वेश्चन इज ये कंटिन्यूअस कब होगा, राइट? व्हेन वुड टी डैश बी कंटिन्यूअस? तो उसके लिए हम एक छोटा सा थ्योरम करेंगे, वो ये टी डैश ऑफ एक्स स्टार would be contained in X star and it would be mapped into X star under this map T dash if and only if T is continuous. क्योंकि हमने लिया था T एक लीनियर मैप. अगर T कंटिन्यूअस भी है साथ में then it would ensure that ये जो मेरा T dash है ये X star को X star के अंदर ही भेजे. और इसका प्रूफ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ये है, मतलब जस्ट डेफिनेशन से आ जाएगा. ओके, सो लेट B be equal to all x belonging to x such that norm x is less than equal to 1, और जिसको हम बोल सकते हैं closed unit ball in x. Then अगर t continuous है it is equivalent to saying that T of B is bounded. That's obvious. क्योंकि उसी का मतलब होता है ना, अगर डोमेन बाउंडेड है तो रेंज भी अगर बाउंडेड है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट इट इज कंटीन्यूअस प्रोवाइडेड दैट t is linear. और यहाँ पे t is of course linear because t is the linear map on x. Now this is equivalent to saying that अब f भी कंटीन्यूअस है तो इट मीन्स दैट चूंकि अगर ये बाउंडेड है तो चूंकि f of t of b भी फिर बाउंडेड होगा क्योंकि f भी कंटीन्यूअस है for all f belonging to x star. But this is equivalent, again, this statement is equivalent to saying that T dash f of B is bounded because T dash f is exactly defined as T dash at f is defined as, चलो ठीक है, T dash at f is defined as f composition T. और ये f composition T ही है, is bounded, it is one and the same thing by our definition, for all f belonging to x star. What does that mean? But this is equivalent to saying that exactly T dash f जो है is continuous, which means that T dash तो linear है ही, it means that T dash f भी belong करता है x star में for all f belonging to x star. तो ये प्रूव हो गया कि अगर T continuous है if and only if T dash x star is contained in x star. Okay, now what we do now, इसका मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं, we denote, देखो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैप T है that is a map from L to L, तो ये T डैश है. और देन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि T कंटिन्यूअस है, T अगर कंटिन्यूअस है तो ये जो इसका एक सब स्पेस है x स्टार, इट इज मैप्ड टू x स्टार. तो इसका मतलब I can think of T dash restricted to x star as a map from x star to x star. ठीक है? So we denote it, हम इसका नाम रखेंगे obviously T star, और इसी को हम कहते हैं conjugate of T. So if now what we have, if T is continuous, of course linear तो है ही, it implies that T belongs to Bx, the bounded linear maps on X. Then we can define T dash restricted to X star, which is a map from X star to X star.
defined by T dash at F is equal to F composition T. Of course, these are maps, so they are always identified by their action on their domain, which is X. For all F belonging to X star, we denote T dash restricted to X star by T star. So then T star, so that T star is now a map from X star to X star given by T star at F evaluated at X is the same as F composition T evaluated at X for all F belonging to X star. So, okay, now what? T star is called the conjugate of T. Now, clearly, so now T star, so far what do I have? फिर से मैं आना चाहूंगा. Now I've got a given map T that is a bounded linear map on X, and it belongs to B of X. Now I have found T star as a map from X star to X star. इसको मैं बार-बार याद दिलाना चाहूंगा. T star at F is equal to F composition T. For all इस T की मदद से हमने ये define किया. और इसको हमने कहा conjugate of T. Now clearly T is linear because it is a composition of two linear maps. Because F is linear, because F belongs to X star, that means bounded linear maps on X that are scalar value. So clearly T star is linear, right? Furthermore, it is also continuous, right? Because it is a T star is linear and continuous. Why? Because these two maps are also continuous. T is continuous, F is continuous. So clearly T is linear and continuous, which implies that T star belongs to Bx star. And a T star is a bounded linear map on X star, and from X star to X star. So कहने का मतलब given T, I have found this T star by this formula that belongs to Bx star. So furthermore, हम इसके बारे में अब हम पता चल गया conjugate के. Well, this is the definition of what we call conjugate. Okay. Now furthermore, अगर मैं इसका norm evaluate करना चाहूँ, norm of T star, जो उसका operator norm होता है, वो होता है supremum of this set. Norm of T star, because it applies on F, such that norm of F जो है, वो less than equal to 1 है. This is the definition of the operator norm of a bounded linear operator, but this is the same thing as, now ये जो T star F है, ये X star में है. So this is basically, should I write? T star F evaluated at X such that norm of F is less than equal to 1. ये तो पहले से ही था, लेकिन इस पे भी restriction है. And साथ में norm of X is less than equal to 1. But that is the same as supremum, जो T star F की definition है, it is F composition T of X such that norm of F is less than equal to 1, norm of X is less than equal to 1. Now, using the fact that F and T are both bounded linear operators, this should be less than equal to supremum of norm of F into norm of T into norm of X such that norm of F is less than equal to 1 and norm of X is less than equal to 1. But as you can clearly see, तो अगर मैं इसका supremum लेना चाहूँ, तो ये तो at most 1 है, so this should be less than equal to norm of T. तो ये जो T star है, इसका norm of T से less है, right? Okay. तो simply आपको इसको value मतलब F को लेना है at most 1, तो ये इसका supremum जो होगा, as usual, norm of Tx
बिल्कुल सही। या फिर tx को ऐसे ही रखते हैं हम। हाँ ठीक है, tx को ऐसे ही रखते हैं, बेटर रही है। यानी यहाँ मैं रखूंगा, वो ब्रेक नहीं करेंगे। वैसे वो भी सही है, दोनों एक ही होता है वैसे। एनीवेज, क्योंकि फिर हम सुप्रीमम लेंगे, इसका इसका वैल्यू देंगे तो बन जाएगा नॉर्म ऑफ टी। ओके, राइट। Now furthermore we use Han Banas. Now suppose also, chalo, yeah, we know that, chalo likhte hain, we know that if x belongs to x and norm x जो है less than equal to 1 है, by Han-Banach theorem there exists a bounded linear operator. By Han-Banach theorem there exists H belonging to x star, a bounded linear map that is scalar valued such that norm of H is equal to 1 and H of T of X is exactly equal to norm of T of X. तो ये हमने किया था ये बेसिकली हमने किया था हान-बनाक थ्योरम की कॉरोलरी, लेकिन वहां पे हमने x लिया था बाय dx की। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज t इज अ मैप फ्रॉम x टू x। अगर x x में है तो tx भी x में, तो यहाँ सिंपली x की जगह लेना है t of x, so उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज t of x also belongs to x. So it implies that, so once it implies that, अब देखो this basically is nothing but that is अगर मैं H composition T लेता हूँ, it's like F composition T because H belongs to X star, so it basically means T star F at X जो है that is exactly equal to norm of Tx. Okay, so once I've done that, it implies that now. Okay. T star of H, sir. H, right. H. Okay, actually ऊपर है ना फॉर्मूला में F मैंने लिया, तो it मतलब this is what I get, यानी I get T star H at X is exactly equal to norm of Tx. Now if I look at what is, because T star is a bounded linear operator, by definition T star जो है it would be equal to supremum over norm of F is less than equal to 1. T star at F, right? Now that would be greater than or equal to norm of T star at H, because H का जो norm है वो less than equal to 1 हमने लिया है, कहाँ गया? तो H का norm जो है वो हमने 1 लिया है, तो H का norm अगर हमने 1 लिया है तो it is one of the elements in the set, तो सुप्रीमम से ये बड़ा छोटा ही होगा। कहाँ गया ये? कहाँ लिखा था मैंने? अच्छा मैंने दो पेज एक साथ किया। Okay, so that is the same thing as अब अगर मैं x भी norm, मतलब this is now an operator norm, right? So it is a functional actually, because T star is a map from x star to x star. So this is basically equal to supremum over norm x less than equal to 1, norm of T star H evaluated at x. And हमने अभी वो देखा, वो बराबर है, but that would be greater than equal to, है ना? T star H evaluated at x जो हमने अभी किया था, जो ना हमने लिया था norm x is greater than equal to 1, less than equal to 1, या सीधे ही which is equal to जो हमने अभी लिखा था norm of tx. So and of course I could just ठीक है मैंने ठीक किया। ओके, तो इसका मतलब जो है मेरा, और यहाँ पे जो नॉर्म है उसका 1 है x,
So therefore, I have Tx is less than or equal to norm of T star. And if I take the supremum, so because and norm of X is of course mainly I less than equal to 1, as you can see. Okay, norm of X mainly I less than equal to 1. So इसका चूंकि ये सभी एक्सेस के लिए है तो it implies that norm of T is less than equal to norm of T star. So what I want to get now, इसका मतलब ये हुआ कि norm of T star P less than equal to 1, less than equal to norm of T है और norm of T भी less than equal to norm of T star है. तो अगर मैं इसका नाम 7 second दूं, by first and second, norm of T is equal to norm of T, yeah, norm of T star is equal to norm of T. So what have I now? Now T is a bounded linear operator from X to X. So I have found a T star belonging to Bx star, right? Defined by, again, T star at F is equal to F composition T for all F belonging to X star. तो furthermore हमने देखा इनका norm भी same है. In this way I can think of, अगर मैं अब ये ज़्यादा इसको abstract बना दूं, तो I have got a map from Bx to Bx star that preserves the norm. And T goes to T star. And of course in दोनों का norm which preserves the norm. Furthermore, I could have done this actually, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा complicate नहीं करना चाहता था, but I could have, पहले usually मैं Bx के लिए ही लेता हूँ, I could have in a similar fashion, अगर T मान लो होता अब a bounded linear operator from X to Y, ज़रूरी नहीं है from X to X. In a similar fashion, I could have taken now then, let me Lx to be home X K and L sub Y to be home Y K, where X and Y are normal linear spaces. So then मैं वो T dash define कर सकता था actually from Ly to Lx by the same thing, T dash at F is equal to F composition T, where now T जो है ये belong करता है Bxy में. ठीक है, तो ये मैं मैप डिफाइन कर सकता था. फिर जो मेरा कॉन्जुगेट है ये बन जाता मैप फ्रॉम B, बन जाता मैप फ्रॉम Y स्टार टू X स्टार, तब भी इसको कॉन्जुगेट ही कहते हैं. एक्चुअली ये ज्यादा जनरल है, वो सिंपलर है थोड़ा सा उससे, लेकिन अब वंस हमने वो किया तो ये उतना मुश्किल नहीं है इसको समझना. सेम आइडिया, सेम चीजें इसमें, मतलब कोई फर्क नहीं जो हमने आर्ग्यूमेंट किया टू शो दैट दिस वुड हैपन. ठीक है, अगर T Bx में है तो I can define my T star as a map from, once मैं इसको restrict करूं, because this would contain Y star, this would contain X star. So then T star जब मैं इसको restrict करूंगा तो ये फिर से वही argument. तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसको एक home assignment छोड़ देता हूँ. जो भी हमने किया उसमें तुम T को लो Bx में, फिर ये मेथड जो मैंने यहाँ हिंट दिया इसको फॉलो करके दिखाओ, देन T स्टार में वही सारी प्रॉपर्टीज है, बट दिस इज अ मैप फ्रॉम Y स्टार टू X स्टार. एंड ऑफ कोर्स अगर मैं X और Y को सेम लेता हूँ तो ये बन जाएगा मैप जैसा कि हमने अभी किया. ठीक है, हेलो, आर यू लिसनिंग? तो ये तुम अपना ये तुम होम असाइनमेंट करोगे, लेकिन वंस वो, मैं पहले ये करता, लेकिन ये मतलब पहले सिंपलर मैंने लिया, लेकिन वंस वो क्लियर हो गया वो कहाँ पे होता है एग्जैक्टली सारा कुछ यहाँ फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. सो प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट. अब हमें पता है हमारे पास ऑपरेटर है T belonging to Bx, right? But this is a bounded linear, this is of course a normal linear space. Then given that I have found this T star belonging to Bx star, that's again a normal linear space. Okay, now the question is,
ऑब्वियस क्वेश्चन है, मतलब T1 बिलोंग करता है Bx में कोई मैप, सो देन आई कैन फाइंड T1 स्टार, इसका कॉन्जुगेट मैं ढूंढ सकता हूँ बाय द सिंपल फॉर्मूला जो मैंने अभी दिखाया। इसी तरह से मेरा कोई दूसरा हो सकता है T2, है ना, तो इसका T2 स्टार होगा कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट। लेकिन T1 प्लस T2 भी बिलोंग करेगा Bx में, क्योंकि ये तो वेक्टर स्पेस है, तो फिर इसका कॉन्जुगेट भी होगा जो बिलोंग करेगा Bx स्टार में। द क्वेश्चन इज हाउ इज दिस T1 प्लस T2 स्टार, लेकिन T1 स्टार प्लस T2 स्टार भी बिलोंग करेगा Bx स्टार में, क्योंकि वो भी तो वेक्टर स्पेस है ना, ये बाउंडेड लीनियर मैप है, ये उसका कॉन्जुगेट है, ये ऑलरेडी उसमें है क्योंकि T1 T2 बाउंडेड लीनियर मैप्स है, तो इसका मतलब ये भी इसमें है, तो उनका सम भी होगा। तो सवाल है क्या ये दोनों किस तरह से रिलेटेड, हम दिखाएंगे ये एक्चुअली बराबर होंगे, है तो एक ही स्पेस में, नो एग्जैक्टली दे वुड बी आइडेंटिकल। ओके, सो नाउ लेट्स डू दैट। तो मतलब हम जो प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे वो पहला ये है, सो T1 अल्फा चलो प्लस बीटा, मैं स्केलर मल्टीप्लाई भी करूंगा, T2 स्टार इज इक्वल टू अल्फा T1 star plus alpha, sorry, beta T2 star for all alpha beta belonging to my field and T1 comma T2 belonging to Px. दूसरी प्रॉपर्टी is T1 composition T2 का स्टार is equal to T2 composition star T. अब composition यहाँ पे well defined है, because मैंने लिया है, जैसे इसके लिए चाहिए मुझे, अगर T1 is a मतलब is a map from of course x to x, तो T2 जो है that's a map from x to x, right? Then T1 composition T2 भी होगा map from x to x, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x to y होता तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है इस प्रॉपर्टी, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी तो तब भी जो मैंने दूसरा बताया था ना, अगर हम bxy ले, ये वाली तब भी ट्रू होगी, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि कंपोजिशन नीड नॉट बी डिफाइंड। तो यहाँ पे ये जो हमने मेथड किया उसके लिए ये है। इसी तरह से I स्टार इज द आइडेंटिटी मैप, ठीक है, तो इसको प्रूव कर सकते हैं हम। प्रूफ पहली वाली प्रॉपर्टी, इसको क्या, ये शायद बंद हो जाएगा 5-6 मिनट के बाद, तुम फिर से ज्वाइन करो। पहली प्रॉपर्टी वो क्या है, अब अगर मुझे किसी चीज को देखना है, मतलब दिस इज इक्वेशन ऑफ टू मैप्स, दिस इज अ मैप, स्टार जो है इट बिलोंग्स टू बी एक स्टार, A map is known by its action, यानी अगर उसका एक्शन सेम है, अगर वो सेम तरह से एक्ट करता है अपनी डोमेन पे, तो वो सेम है, तो वही हम दिखाएंगे उनका एक्शन से। सो आई इवेलुएट नाउ अल्फा टी, अगर मुझे ये दिखाना है ना ये दोनों बराबर है, सो आई हैव टू शो दैट दिस इज ट्रू, दे आर इक्वल फॉर ईच एफ, यानी अगर एफ पे एक्ट करेंगे, जहां पे एक्ट करते हैं, राइट, एफ मीन्स दे एक्ट ऑन एक्स स्टार, राइट, तो f belongs to x star, तो अगर मैं दिखा दूं ये एक्ट, उनका एक्शन सेम है, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो मुझे दिखाना है फॉर ईच f, but where is this belongs to x star, so it's again a map, so I again have to act, मतलब इसका एक्शन मुझे दिखाना है सेम। I hope तुम ये समझ सको। Anyways, so by definition this should be f composition alpha t1 plus beta t2 applied to x. Now this is true for all f belonging to x star and all x belonging to x. Now this is the definition of the conjugate. मैं adjoint बोल रहा हूँ, oh no, adjoint थोड़ा इससे अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। But this is actually f applied to alpha t1 plus beta t2, whole thing applied to x. But f is linear, so it would be alpha f of t1 plus beta f of t2 applied to x,
and acting as point wise जैसा कि हम करते हैं, लेकिन तरीका है, it would be ft1 applied to x plus beta ft2 applied to x. So that means, okay, अब इसको फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं. So it would be alpha t1 star applied to f at x plus beta t2 star at f जो भी है applied to x, but that is the same thing as alpha t1 star plus beta t2 star applied to f applied to x. This thing applied to x for all f belonging to x star and for all x belonging to x, which implies अब इनका action same है, which implies that alpha t1 star, alpha t1 plus beta t2 whole star applied to f is equal to alpha t1 star plus beta t2 star applied to f for all f belonging to x star, which would in turn imply इनका action same है तो as maps they are same, यानी ये बराबर है इसके. Okay, now इसी तरह से दूसरा part इसका. So I've got T1 composition T2 whole star applied to F applied to X would be by definition equal to F composition T1 star T2 star. अब यहाँ पे मैंने बोला ना इसका सेम होना जरूरी है, क्योंकि वरना ये जो मैं लिखने वाला हूँ वो गड़बड़ हो जाएगी. यानी it is F composition T1 applied to T2 of X. Right? अब F composition T1 पे अगर मैं वापस वो formula लगा दूँ, you have to remember this also belongs to X because T2 is a map from X to X. So it should be basically T2 star applied to F composition T1 applied to X. But then applying it again, so it would be T star composition T1 star, yeah, of T1 star, because इसको मैं अब कर सकता हूँ applied to X. Now that would be T2 star composition T1 star applied to F applied to X. Of course, ये सारे का सारा है for all F belonging to X star and for all X belonging to X. Now this is also true for all F belonging to X star and for all X belonging to X. So by that I get T1 composition T2 का star is equal to T2 star composition T1 star. Third जो है वो सबसे simple है, इसलिए वो home assignment. यानी I star, चलो कर ही देता हूँ. Now I star F at X किसके बराबर होगा? That would be equal to F composition I of X. That is the definition. Because identity is also a linear map, but that is F of X. But that is same as I of F of X. So this is true for all F belonging to X star and for, well, this is the definition. The identity of X is X for all X belonging to X. Now this is also true for all F belonging to X star and for all X belonging to X. And of course, इसका मतलब है I star is equal to I. Okay. लेकिन यहाँ मैंने बोला वो जो मैंने होम असाइनमेंट दिया था, when I choose the map from X to Y, ये प्रॉपर्टी नहीं चलेगी अगर वो डिफरेंट हुए तो, क्योंकि then this need not be, this is inside Y, right?